हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 7 दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू फर्स्ट। सो बेसिकली हमने क्लास 10 सिविक्स में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड जो एक्चुअल मतलब होने चाहिए थे और रियलिस्टिक आउटकम्स, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे इन वेरियस रिस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। So first we will understand the difference between democracy and dictatorship. So basically dictatorship में क्या होता है, एक डिक्टेटर होता है, वो सब कुछ रूल बनाता है, पीपल के पास पावर नहीं होते, दे हैव टू एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज भुगतेंगे, दैट्स इट। बट डेमोक्रेसी में क्या है, इट्स अ गवर्नमेंट, पीपल्स गवर्नमेंट। तो people have the power to elect their representatives which will in turn run the government and run the country. तो अब हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी वुड बी बेटर। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। पहला है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। सेकंड, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। थर्ड, इट improves the quality of decision making. Fourth, it provides a method to resolve conflicts. And lastly, it allows the room to correct mistakes. ये सारे जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी लिख सकते हैं हम, या फिर अगर क्वेश्चन आए कि why democracy is better than dictatorship, then also you can write these 5 points. Now, when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives, such as a rule by monarch or military or religious leaders. But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. So we face a dilemma. पहला है कि democracy is seen to be good in principle, but practice में it is not seen so efficient. इसलिए we have to think hard about the outcomes of democracy. So let's start. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold election, they have parties and they guarantee rights of citizens. ये जो सारी चीजें हैं, they are the components of democracy. इनके बिना जो है वो democracy हो ही नहीं सकती. Now, while these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures. जैसे इंडिया और यूएस को कंपेयर करते हैं लेट्स से, तो अगर हम देखें इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की तो ऑफ कोर्स यूएसए इज अहेड ऑफ अस। बट इफ यू थिंक ऑफ कल्चर, तो इंडिया इज रिच इन कल्चर एज कंपेयर टू यूएस एंड एनी अदर कंट्री। अब our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy, or we start doubting if we are living in a democracy. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. But the citizens हैं, they have to take advantage of those conditions and achieve those goals. तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप आउटकम में। देखो, जो चीज़ें पेपर पे लिखी जाती है वो हमेशा इम्प्लीमेंट नहीं होती है। एक्सटर्नल सिचुएशन, पीपल के विलिंगनेस, उन सब पे भी इट डिपेंड्स। तो सिमिलरली जो गवर्नमेंट है, इट ओनली क्रिएट्स कंडीशन, वो बस स्कीम्स लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना, सिटीजन्स को अवेयर करना, वो सब तो हमारा ही काम है। सो दिस इज द सेम थिंग as mentioned in the para. अब हम बात करेंगे accountable, responsive and legitimate government की। तो basically there are some things that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. इसलिए हम elections करते हैं ताकि we can elect our rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectation of the citizens. जो ऐसे गवर्नमेंट हमें प्रोड्यूस करनी है जो हमारी बातें सुने and it is responsive to our needs and expectations. अब before we go into this question, we face another common question. Is the democratic government efficient? Is it efficient? देखो, some people think that democracy produces less efficient government. It is of course true that non-democratic rulers
do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majority or public opinion. तो वो बहुत ही फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं क्योंकि उनको कोई कंसल्ट करना नहीं होता. वाइन जो डेमोक्रेसी है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. तो पार्लियामेंट में भी हमारे जैसे लेट्स से एक लॉ बनाने के लिए पहले लोकसभा में डिबेट होगा और अगर वो मनीबल नहीं है तो राज्यसभा में भी डिबेट होगा, फिर जाके प्रेसिडेंट का साइन लगेगा एंड देन ही इफ ही और शी अप्रूव्स देन वो बनेगा बिल टू लॉ. तो इतना टाइम लेता है एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स मैनी मंथ्स. तो इसलिए जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसीजंस बहुत ही स्लो आते हैं बट दे आर एफिशिएंट. क्यों? क्योंकि हमने पीपल का ओपिनियन लिया है. जो डिक्टेटर्स वगैरह होते हैं दे नेग्लेक्ट देम, जिसके वजह से प्रोटेस्ट वगैरह अराइज हो सकते हैं. अब let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decision very fast, but it may take decisions that are not accepted by the people and therefore face problems. But the democratic government, it will take more time to follow procedures before arriving at a decision. Because it has followed procedures, its decision may be both more acceptable to the people and more effective. इसलिए अगर हम जी कॉस्ट ऑफ टाइम की बात करें तो डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट, चाहे वो स्लो हो बट इट इज एफिशिएंट. अब हम बात करेंगे दूसरे साइड की. सी डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. सो अ citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find out this. जैसे RTI के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑनलाइन में हम पटिशन डाल सकते हैं एंड ऑल थ्रू दीज like from all these sources we can find out कि गवर्नमेंट एक्चुअली कर क्या रही है. हम एक इशू से रिलेटेड हम डिगिंग कर सकते हैं वो सब. सो लेट्स से हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम अब बात करते हैं. तो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली होता है citizen का rights and the means to examine the process of decision making is known as transparency. And this factor is often missing in a non-democratic government. Of course, वो सब कुछ अपनी functioning वगैरह नहीं दिखाती है जैसे democracy होती है. These are the actual outcomes we are talking about. Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. We can also expect that democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think they can. अब अगर लेट्स से अब हमें मेजर करना डेमोक्रेसीज को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, तो हम क्या क्या देखेंगे. हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिसेस है नॉर्म्स प्रोसीजर सब फॉलो कर रहे हैं यानी इलेक्शंस हो रहे हैं यानी डिबेट्स अच्छे से हो रहे हैं यानी डिसीजन जो है वो एफिशिएंट हो रहे हैं यानी ऐसे ऐसे. बट ये तो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम्स. अब हम आते हैं रियलिटी में. अब हम देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है इट शोज अ मिक्स रिकॉर्ड, अच्छा भी बुरा भी. सो democracies have had greater success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debate. ये हो गया हमारा एडवांटेज. अब but most democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. ये हो गया हमारा सेकंड. ये हो गया हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज. Democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. ये भी होगा हमारा डिसएडवांटेज. देखो RTI में कभी कभार क्या होता है, अप्लाई तो कर देते हो, अब क्वेश्चन पूछ लेते हो एंड इट टेक्स लाइक मेनी मंथ्स टू देम फॉर रिप्लाई. लेकिन रिप्लाई में भी वो बोलते हैं द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, वी कैन नॉट शेयर इट, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स. तो कभी कभार जो है भी वो हमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते, तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. बट all one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these respects. अब देखो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसे गवर्नमेंट होगी जो हमारी लोगों की बात सुनेगी और जो करप्शन से फ्री होगी. बट अगर हम रियलिटी में देखे गए तो जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा पीपल की नहीं सुनती है. इट ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड इग्नोर द डिमांड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. एंड जो डेमोक्रेसी है उसमें करप्शन होता है, इट्स नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन. बट एट द सेम टाइम जो नॉन डेमोक्रेसीज है वो भी करप्ट होती हैं. So in this respect also both are neutral. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. Non-democratic से better क्यों है? In the case of कि जो democratic government है it is a legitimate government, मतलब वो law के द्वारा बनी हुई है, it's a well established.
So it may be slow, less efficient, not always very responsive or clean. But a democratic government is people's own government. इसलिए there is in support of democracy all over the world. जितने भी अभी हमारे पास ऑप्शन है, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री, नॉन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, इन सब में से जो हमारी बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है? डेमोक्रेसी. अब as the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. तो बेसिकली ये डेटा की वो बात कर रहे हैं. तो उन्होंने सर्वे किया था, तो भी जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है और जिनमें नहीं है, उन दोनों में से जो लोग हैं दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली, चाहे हो या ना हो अभी उनकी एक्चुअल सिचुएशन. बेसिकली जो पीपल है दे विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, and they also believe that democracy is suitable for the country, and democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. क्यों वो अपना जनरेट करते सपोर्ट? बिकॉज ऑफ democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. This is a very important line and it's quite self-explanatory. Now let's move on to the next part, that is economic growth and development. So, if democracies are expected to produce good government, then is it not fair to expect that they would also produce development? But अगर हम reality में देखेंगे तो जो many democracies हैं उन्होंने fulfill नहीं कर पाए हैं वो expectations. अब हम देखते हैं example and data को. If you consider all democracies and all dictatorships, for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. But अगर हम देखें कि अगर हम डिक्टेटरशिप ये रही हमारी और डेमोक्रेसीज को कंपेयर करें तो इनका जो है वो स्लाइटली ही ज़्यादा है. बट इस रीज़न अलोन की वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ बैड. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्ट्स में इट स्टैंड्स आउट एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स. अब as you have already studied in economics, economic development depends on several factors like country's population size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. I already said this. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. अब देखो, अगर लेट से यहाँ तो स्लाइटली डिफरेंस का हमने सिचुएशन मांगा, अगर डिफरेंस ज़्यादा भी होगा ना तो भी वी वुड प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली. क्यों? ड्यू टू इट सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. देखो इसके जो टॉपिक्स हैं ना बहुत छोटे छोटे हैं और मैं नोट्स इंक्लूड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें मैं हर टॉपिक के अंदर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगी विच वुड हेल्प यू टू राइट योर आंसर्स. अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बारे में. तो इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of a country will have a share and lead a better life? देखो ये क्या मतलब बोल रहा है. लेट्स से एक कंट्री भाई बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत ही उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही हाई है, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसके सारे सिटीजन, लेट्स से ये हमारी हाई क्लास हो गई, ये मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास, इस सबको ही इक्वल शेयर मिल रहा है? ये भी तो हो सकता है बस 2-3 इंडिविजुअल्स के बीच के हाथों में जो है सारी इकोनॉमिक वेल्थ, सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो. इसलिए जो डेमोक्रेसी का रोल है वो ये भी है कि इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. So democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on equal footing, we find growing economic inequalities. अब ये बहुत ही important line है, make sure you pay attention. A small number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. But those at the bottom of the society have very little to depend on, and their incomes have been declining. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो भाई हमारे रिच हैं इनकी सिचुएशन बढ़ रही है, लेकिन जो पुअर है उनकी सिचुएशन घट रही है. इसकी वजह से जो गैप है ना दोनों में, दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, वो जा रहा है बढ़ता, विच वी नीड टू रिड्यूस इट.
Up. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. The poor constitutes a large proportion of our voters. We are referring to India, and no party will like to lose their votes. Yet, democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. तो बेसिकली हम देखते हैं तभी भी इलेक्शंस होता है वो पोवर्टी का इशू कम ही एड्रेस करते हैं बट मोर फोकस ऑन कास्ट gender, religion, and all these parts in India. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. आधी countries इतनी poor है कि they need to import food supplies also. अब हम ये जो कार्टून है it shows कि how wealth is owned by a few. Let's say भाई ये हो गया हमारा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और जिनके पास बस इतना छोटा सा फीस है. ये हो गया अल्ट्रा रिच वाले बंदे जिनके पास वर्ल्ड का इनकम का इतना बड़ा फीस है. अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. अब डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? It will be a fair expectation that democracy should provide and produce a harmonious social life. हमने जैसे पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है कि how democracy accommodate social division as well as social diversity. हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा, श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी के एग्जाम्पल पढ़ा. तो एक चीज याद रखना, जो डेमोक्रेसीज है ना, दे यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट. But no society can fully and permanently resolve conflicts among different groups. But we can certainly learn to respect these differences and we can evolve mechanism to negotiate the differences. इसलिए democracy is the best form of government to do so. जो non democratic regimes है वो basically the suppress minority या फिर internal social differences जिसकी वजह से जो tensions है वो और बढ़ जाते हैं and it can even lead to civil wars जैसे श्रीलंका के केस में हुआ था. Ability to handle social differences, divisions and conflict is thus a definite plus point of democratic regimes. But श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक थी, लेकिन इसलिए we need to ability to handle social differences, divisions and conflict is thus a definite plus point of democratic regimes. But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve these outcomes. पहला कि जो डेमोक्रेसी है इट इज़ नॉट अ सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, जैसा हमने श्रीलंका में देखा था. उसके गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स लगाए थे और वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर रही थी. द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू. Majority and minority opinions are not permanent. They change with situation and time. Second point, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion, or race, or linguistic group, etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. But if someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. देखो हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं. ये तो हो गए सिन्हाला और ये हो गए हमारे तमिल स्पीकर्स. तो जो सिन्हाला थे उनकी गवर्नमेंट ने तो किया, लेकिन जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुई थी कि दे वुड फोस्टर बुद्धिज्म, तो उनका जो मेजॉरिटी रूल होता जाता और वो जो रूल है वो एक्सपांड हो रहा था इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. इसलिए जो वो डेमोक्रेसी थी उसमें सिविल वॉर हुई. अब हम पढ़ेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स के बारे में. तो जो डेमोक्रेसी है इट इज़ दी लाइक एज वी हैव स्टडी दैट इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स होता है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप. And it is the same case in promoting dignity and freedom of individual. It stands superior as compared to other form of government, and every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect, and the passion for respect and freedom are the basis of democracy. अगर पूछें ये 1 mark में आ सकता है कि what are the basis of democracy, then you can write the passion for respect and freedom. Now, democracies throughout the world have recognized this, at least in principle, and this has been achieved in various degrees in various democracies.
For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. Definitely, अगर आपकी पूरी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इतनी जल्दी हम सबको इक्वल लेवल पे नहीं ला सकते, हमें उनको कुछ सपोर्ट देना ही पड़ता. जैसे इंडिया में ले लूँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था वो बहुत ही रिजिड था, अभी तक वो कंटिन्यू होता है सम प्लेसेस में, और इसलिए हमने जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जैसे ओबीसीज, एससीज, एसटीज, उनको हमने प्रोवाइड किया रिजर्वेशन ताकि दे कैन ऑल्सो डेवलप एंड कम एट इक्वल लेवल विद अदर पीपल. टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन. अब हम लेते हैं वुमेन का केस. Most societies across the world were historically male-dominated societies. That is, they were patriarchal in nature. हमने ये term को already पढ़ा हुआ है. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. But it does not mean that women are actually always treated with respect. ये तो हो गया हमारा principle. अब हम बात करते हैं reality की. But अगर principle recognize हो जाता है तो it is easier for women to wage a struggle against which is now unacceptable legally and morally. तो देखो, principle बना, ज़रूरी नहीं है रियलिटी में वो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन अगर उसको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है ना, तो एक उसको मॉरल फोर्स मिल जाती है, उसको एक सपोर्ट मिल जाता है कि येस इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, कैन होना, लेकिन रियलिटी डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस अगेन. अब in a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में जो है, डिक्टेटर जो चाहता है वही होता है, पीपल जो चाहते हैं वो नहीं होता. The same is true of caste inequalities. मैं आपको caste already बता चुकी हूँ. Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal caste and equal opportunity. But there are still instances of caste-based inequalities, but these lack the moral and legal foundation. Hence, it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. It's a very important line. ये question के form में भी आ सकता है. So make sure you supplement all these examples with your explanation in the answer. अब expectations from democracy also function as the criteria for judging any country. कभी कभार जो expectations है ना, वही हमारा criteria बन जाता है जज करने के लिए. So what is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. इसका एग्जाम कभी खत्म ही नहीं होता. जैसे इसने एक एग्जाम पास किया, दूसरा टेस्ट आ जाएगा. As people get some benefits of democracy, they ask for more and more, and they want to make democracy even better. हम इसको ये नहीं बोल सकते कि exactly वो लालच है, बट इफ यू गेट सम बेनिफिट तो तुम्हें एक अंदर से ना मॉरल फोर्स आ जाता है, यू गेट मोटिवेटेड कि येस वी कैन मेक इट मोर बेटर. सिमिलरली अगर हम लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे अबाउट देयर राइट्स, उनको पार्ट मिलेगा, चांस मिलेगा पार्ट लेने का पॉलिटिकल प्रोसेस में, दे वुड वांट देयर कंट्री टू बिकम इवन मोर बेटर. दैट इज व्हाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, they will always come up with more and more expectations as well as many complaints. The fact that people are complaining is itself a testimony to success of democracy, because वो complain इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो awareness है, वो vigilant है. अब वो देख सकते हैं कि yes, critically वो examine करते हैं कि ये ruler ये कर रहा है, अगली बार हम इसे elect नहीं करेंगे इसके policies की वजह से. That is why अगर people complain भी कर रहे हैं तो it is a success of democracy. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. So, through this line we complete our chapter. मैं notes upload कर दूँगी description box में. So make sure you go through them once. And I will upload all the important points which would help you in formulation of your answers. Thank you for watching the video, and if you like the video, please share, subscribe and comment on the channel. Thank you so much.